Good evening, everyone. My today's topic in is mishaps in endo. As we all know that with the great power comes great responsibilities. But sometime with great responsibilities and great powers, mishaps can happen. वरना थेनोस को सारे रिंग्स कहाँ से मिलते? So, what is a mishap in endodontics? A clinician may face unwanted situation during root canal treatment, which can affect the prognosis of endodontic therapy. These are also called as endodontic accidents or endodontic mishaps. Accurate diagnosis, proper case selection, and adherence to basic principle of the endodontic therapy may prevent such type of accidents. Definition is, according to Engel, these are unfortunate incidents that occur during the treatment, and according to Rabbi Najat, these are the unforeseen or unwanted circumstances happen during root canal treatment. And what are the type of endodontic mishaps? They should be SS related, they should be instrumented related, they should be obturation related, or sometimes miscellaneous. So SS opening related accidents are, as you can see this case. Is the case is visible? Yes, Is this very slide is clearly. Yeah. yeah. Yes, yes. As you can see this case, I overcome this case when I was senior lecturer in Gwalior in Ideas Dental College. A patient came to the college with pain. As this was the case, SS opening related problem was there, and it was short obturation and abscess was there also. So what happened when you do the SS opening related cases or endo or mishaps? First is treating the wrong tooth. Sometimes misdiagnosis may happen. This may lead to the mishap. You are thinking that the premolar is the culprit tooth, but sometimes it is the molar. Sometimes you think that molar is the culprit tooth, but it was the premolar. So sometimes this type of mishap can happen when you treat the wrong tooth, and after few that patient comes, डॉक्टर साहब मेरे को तो अभी भी दर्द हो रहा है. May cause due to inattention or misdiagnosis. Inattention बहुत कम होता है, मिसडायग्नोसिस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है. Treatment is appropriate treatment of both of the teeth, the one incorrectly opened and the one with the original pulpal problem. Prevention is making the tooth to be treated before isolated with the rubber dam. Second is incomplete removal of caries. Sometime may happen. Secondary caries under the existing restoration is one of the reason of the need of endodontic therapy. Preoperative radiograph should be studied under the magnification. If any doubt exists about the secondary caries, the entire filling must be removed and the SS has to be redesigned accordingly. Sometime it happens, but yeah, missed canal. This is one of the most happen type of mishap as we can see even daily practice. Missed canals like MB2 mid-mesial canal. Mid-mesial canal कम होता है but MB2 yeah, many people miss that. Causes lack of thorough knowledge of root canal anatomy along with its variation, inadequate access cavity preparation, incomplete deroofing of the pulp chamber, mesiobuccal, distobuccal, or lingual canals, palatal canals. Everybody search for them, but when it comes to mid-mesial canal or MB2 canal, many people don't search it. And nowadays, you can see more than 75% of cases has MB2 there. Common site of canals is this canal is if canal is not centered in the root canal during exploration, one should look for the presence of extra canal.
Maxillary premolar may have three canals. May have. Maxillary molar usually have four canals, as I already mentioned. Nowadays, more than 75% of the people have MB2. Mandibular incisor usually has extra canal, and mandibular molar may have extra mesial canal or distal canal, but mid mesial canal सबसे ज़्यादा होता है. Treatment is treatment is appropriate and should be attempted before surgical correction. Prevention is good radiograph taken at the different horizon angulation. Adequate access cavity design should be done. There should be good illumination and good magnification. You can use dyes too, like methylene blue. You can use sodium hypochlorite for champagne test. Yeah, you can use DG16 Explorer, and DG16 is very good for exploration. Still, I use it. Now, cervical perforation. Cervical perforation is directing the burn non-parallel to the long axis of the tooth. The treatment is the primary protocol is the hemorrhage control with 1 is to 150,000 epinephrine followed by the perforation repair with MTA. And the prevention is we should have to study the preoperative radiograph and evaluate the pulp chamber morphology. And the proper burr alignment along with the long axis of the tooth should be done. Whenever this thing happens, always keep one thing in mind. Don't get panic. कॉटन लेना या फिर वॉश पीस लेना, एले लेना, डिप करना और लगाना. सबसे पहले हमारा प्राइमरी और मोटो होगा वहाँ पे हेमरेज को रोकना. एक बार हेमरेज रुक गया वहाँ पे कॉटन लगा दो, एक दो दिन के लिए छोड़ दो, क्लॉट हो जाए दोबारा बुलाओ, फिर से एक बार वहाँ पे चेक करो ब्लीडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है. अगर वहाँ पे ब्लीडिंग अभी भी है, एक बार फिर से वहाँ पे हेमरेज रोको. ऐसा एक से दो बार आपको करना पड़ेगा क्योंकि होता है. थ्योरेटिकली बातें कुछ भी हो पर प्रैक्टिकली ये चीज़ देखने को मिलती है. एक बार आपकी ब्लीडिंग अरेस्ट हो गई, वहाँ पे बंद हो गई ब्लीडिंग, सबसे पहले वहाँ पे उसको सील करो. एमटीए से करो, बायोडेंटिन से करो. आपके पास टाइप 9 जीआईसी है, आप टाइप 9 जीआईसी से करो, पर करो. आपको एमटी में प्रॉब्लम है, आप बायोडेंटिन यूज करो. आपको बायोडेंटिन से प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाते यूज, आप जीआईसी यूज करो. बट सबसे पहले उस जगह को सील करो. सबसे पहले एक बार वो जगह सील हो गया प्रॉपरली, आपने उस परफोरेशन को रिपेयर कर लिया, देन आफ्टर गो फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट, वरना बहुत प्रॉब्लम देने वाला है. आवाज आ रही है? Yes, आ रही है yes, सर. yes. Yeah, आ रही है. yeah. Canal shaping and cleaning related accidents. कैनाल ब्लॉकेज में काफी कॉमन है. It is defined as the obstruction of the previous patient canal system that prevent the access to the apical constriction or the apical stop. Caused due to tissue debris, presence of fractured instrument or cotton pellet or restorative material. Most of the time, tissue debris, you can see the tissue debris there. What happened during this thing? Apical debris comment is the term we use for that. While doing the BMP, when you do the BMP with your K file, 15K file, 20K file, but you have not done the proper irrigation, the debris collected in the apical area or the apex. This causes the apical debris comment, and due to that, there is also loss of the working length. Canal blocked. Distal canal comes 19 mm or 20 mm, but mesial canal showing the working length of 15 mm or 60 mm. Why? Because the canal is blocked due to debris. It is the most common mishap happened. To overcome this thing, keep one thing in mind. Whenever you do the BMP or biomechanical preparation with your K file or your H file, always do the proper or copious irrigation. Whenever I do my cases,
I do the irrigation for 10 minutes always, continuously. Doesn't matter how much it costs. But केस खराब हो गया तो नाम खराब होगा. So if you are doing your root canal, always keep one thing in mind. Do the copious irrigation at least for 10 minutes. It required a lot of patience for doing continuous irrigation. Presence of fractured instrument, yeah, this thing happened when we broke the file. Even सभी से होता है, मुझसे भी हुआ, मैंने भी फाइल तोड़ा. तो if a fractured instrument is present there, your canal is blocked apically or in the middle one third, your canal is blocked. So endo नहीं हो सकता, but you can do one thing to overcome this mishap. Either you have to do the instrument retrieval or you have to do bypass. Cotton pellet or restorative material. This is the really the mishap of the mishaps. Because the cotton pellets or restorative material इतनी easily नहीं जाते हैं. If this thing happen, yeah, this is very unfortunate. Even in the mishap. This is the perfect example of the canal blockage. You can see the radiograph of a canal blockage. Obturation is there and at least around 4 to 5 short there. And I think this was taken during consultation in Gwalior. What is the treatment for this thing? Place a small amount of EDTA on a fine instrument and introduce in the canal in watch winding motion with copious irrigation. Endo ultrasonic should be used to dislodge the dead tunnel chips. Prevention is straight line access to the canal orifice. Always use similar size instrument first. All caries and unsupported tooth structure should be removed before completion of the SS cavity preparation. SS preparation and rotation of intercanal instruments should be avoided. All temporary restoration must be removed and keep the pulp chamber filled with irrigants during canal preparation. As I already told you, irrigation is the key if this type of mishap happen. Ledge formation. Most common type of mishap during the early days of doing endo treatment. शुरू में बहुत लोग लेज बनाते हैं, बाद में कोई नहीं बनाता. मेरे से भी बनी थी. It is an internal transportation of canal which prevents positioning of instrument to the apex in the patent canal. Ledge is an artificially created deviation of the root canal wall that prevents the passage of an instrument to the apex of an otherwise patent canal. Causes rapid advancement or skipping of file sizes, incorrect assessment of the root canal curvature, inadequate irrigation during instrumentation, rotating the file at working length, forcing uncurved instrument apically short of working length in curved canal, and failure to pre-curve the files. This is a ledge. It depends on curvature. If the curvature type of ledge is, then increase the curvature with the canal. If length associated ledge is there, then longer canal are more prone for the ledge. If diameter associated ledge is there, small diameter are more easily ledged. Treatment is hand instrument. Use 10K file. File tip is sharply bent and then inserted into the original canal, or we can use the night eye files. I prefer night eye files while treating the ledge or ledge correction.
A short up and down movement is repeated to enlarge the entrance and the original canal until the ledge is reduced. You can use the ultrasonic tips, but if you are not friendly with your ultrasonic tips, don't use them. You will fracture them. Rotary instrument. If it is a nickel titanium based rotary instrument, you can use easily. But if it is not night eye rotary, please don't use it. If you are not friendly with it, you can easily break your instrument while correcting the ledge. Surgical approach should be done. Periapical surgery or intentional reimplantation with retrograde endodontic treatment should be done. सबसे इजी तरीका है नाइटा फाइल्स यूज करिए. अगर आपने लेज बना दी है, हैंड नाइटा यूज करिए. सबसे इजी तरीका है. बहुत इजीली एक आध घंटे के अंदर आप लेज को करेक्ट कर लेंगे. प्रिवेंशन ऑफ लेज फॉर्मेशन. use of SS file to determine the canal curvature, accurate evaluation of radiograph and tooth anatomy, pre-curving instrument for curved canal, use of flexible night-eye files, use of sequential filing, frequent irrigation and recapitulation, passive step back and balance foot technique are beneficial method of canal preparation that reduce the chance of ledge formation, and used of circumferential filing. Now, deviation from normal canal anatomy. They can be zipping, they can be transportation, internal transportation, or they can form a elbow. So, what is zipping? It is defined as the transposition of the apical portion of the canal. It produces elliptical with apex toward the middle third and base, or zip towards the cementum surface. The causes for the zipping is failure to pre-curve the file, forcing the instrument in the curved canal, and use of large stiff instrument bore out a curved canal. You can see an image of zipping there. Over preparation of the outer wall of the apical curvature of the canal with inflexible instrument. This cause the zipping. आपने देखा होगा कई बार आपने बीएमपी करी और नीचे से जो है काफी वाइड हो गया. सिंपल सी बात है, zipping कर दी. In case of zip, any type of obturation can be used, but thermoplasticides are preferred. Prevention. Use of pre-curve file for curve canal. Use incremental filling technique. Use flexible files. Canal transportation. A biaxial canal transportation is moving the position of canal normals anatomy through foramen to a new location on external surface. There are two types of canal, three type of canals transportation are there. Type 1, type 2, type 3. Minor movement of physiological foramen, moderate movement of physiological foramen, and severe movement of physical foramen. टाइप 1 में क्या रहेगा? It is sufficient residual denting and can be maintained. Number 2 में MTA should be used to provide a barrier against with obtural material can be packed. And type 3, it requires surgical intervention, otherwise we have to do the extraction. Treatment is for type 1 can be cleaned and saturated it if sufficient residual dentin is maintained. Type 2 is treated by placing a barrier to control bleeding and provide a backstep back against the subsequent obturation procedure. Type 3 it requires obturation as best as possible followed by corrective surgery. So this is canal transportation.
or apical transportation. Third is elbow. It is the narrowest point of the zipped canal. A zipped canal is apical to elbow and usually obturation ends at the elbow. तो इस वजह से ऑब्चुरेशन शॉर्ट रह जाती है कई बार. स्ट्रिपिंग और लेटरल बॉल परफोरेशन कई बार हो जाता है. इवन हैपन ड्यू टू wrong interpretation of the canal, even with the people with experience. Over instrumentation through a thin wall in the root. सबसे बड़ा रीजन. Treatment is you should repair the step perforation and can be done with both non-surgically or surgically. Second is two-step method is most commonly used. While the root canal is first obturated and defect is repaired surgically. Prevention is we have to use the pre-cut files or use of anti-curvature filing. Loss of working length. Reason is tendinal debris or apical debridement, rapid increase in file sizes, malposition instrument stoppers और वेरिएशन इज डिफरेंस पॉइंट. आपकी वर्किंग लेंथ अगर आपने सही नहीं ली है तो आप यकीन मानिए बहुत बड़ा कांड हो जाएगा. दर्द होगा. कांड इन द सेंस मतलब पेशेंट को अगर दर्द हो गया रूट करने के बाद कांड ही है आपके लिए. परेशान करते हैं बाद में बहुत बहुत परेशान करते हैं. डॉक्टर साहब में दांत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब अभी भी दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब कैप लग गया अभी भी दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ. वर्किंग लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. Prevention. Use sound and reproducible reference point. Always use sequential file size and do not skip sizes. Use copious irrigation and recapitulation throughout cleaning and shaping procedure. Use consistent radiograph angles when verifying instrument position radiographically. एपेक्स लोकेटर यूज कर सकते हो. आपको अगर वर्किंग लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है एपेक्स लोकेटर यूज करो अच्छा वाला. आपको यकीन नहीं हो रहा है क्रॉस वेरीफाई कर लो. एक बार एपेक्स लोकेटर डालो. कैनाल में लेंथ आ गई 19.5 लेंथ आ गई जाके साथ में रेडियोग्राफ ले लो. कंफर्म हो गया सही है. सबसे बेस्ट तरीका यही होता है. एटलीस्ट मैं जो यूज करता हूँ यही है. यूज एपेक्स लोकेटर कंफर्म इट विद रेडियोग्राफ. अकेले एपेक्स लोकेटर पे रिलाई नहीं करना है. के लिए रेडियोग्राफ पे रिलाई नहीं करना है. बट जब कुछ नहीं बचता है आपका एक्सरे खराब है इन दैट केस यू कैन रिलाई ऑन एपेक्स लोकेटर एटलीस्ट. आप एपेक्स लोकेटर नहीं है जो टैक्टाइल सेंसेशन एंड रिलाई ऑन रेडियोग्राफ. बट हाँ सबसे बेस्ट तरीका यही है. अगर आपके पास एपेक्स लोकेटर है यूज अ वर्किंग लेंथ कंफर्म विद रेडियोग्राफ. कभी आरसी फेल नहीं होगा. कम से कम वर्किंग लेंथ की वजह से फेल तो नहीं होगा. कोई और एरर हो गया तो बात अलग है. करेक्ट वे फॉर रेफरेंस पॉइंट. ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन होता है बहुत होता है. Excessive instrumentation beyond the apical construction violates the PDL and the bone. It is recognized when hemorrhage is evident in the apical portion of the canal. Can be confirmed by taking a radiograph and inserting paper point in the canal. Treatment is re-establishment of the root length short of the original length and then enlarging the canal with large instrument to the length. Another technique is to prevent the over-extrudation of the filling created on apical barrier. And we can use the MTA calcium hydroxide over there. Prevention accurately returning of the apical construction of the root canal. Using sound reference point, using stable instrument stops, and intermittent radiograph confirmation of the working length.
एज यू कैन सी, कम से कम मैं नहीं मानता 2.5 mm बाहर है इंस्ट्रूमेंट। सिस्ट का केस होगा, एपेक्स तक जाओ, बिल्कुल हल्का सा उसको जो है एपेक्स से हल्का सा करके एक पैसेज दे दो ड्रेन होने के लिए, वहां तक तो ठीक है। यहाँ तक आप एक बार को मेंटेन कर सकते हो, थोड़ा बहुत दर्द होगा पेशेंट को बट यू कैन मैनेज। बट अभी आप इतना ढाई mm 3 mm बाहर निकाल ले, फिर आप ये सोचो कि अभी मतलब पेशेंट को दर्द नहीं हुआ तो ना, पेशेंट को बहुत दर्द होगा, स्वेलिंग भी आएगा। स्वेलिंग आने के बाद वहां पे ऐसे पस भी ड्रेन होगा काफी, सब कुछ होगा, पेशेंट आपकी जान खाएगा। तो इतना ज्यादा ओपन इंस्ट्रूमेंटेशन कभी नहीं करना है अगर लीजन का भी केस आ जाए तो। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत होता है, ये भी बहुत कॉमन टाइप का मिसहैप है। एटियोलॉजी इज वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल रूट कैनाल एनाटमी, overuse or dull instrumentation, inadequate irrigation, uses of excessive pressure during inserting in the canal, inadequate access cavity preparation। अगर वेरिएशन है कैनाल एनाटमी में, यस, आपकी फाइल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी बीएमपी करो फाइल को देखते रहो। सेकंड थिंग जो मैंने बोला, ओवर यूज और डैमेज और डल इंस्ट्रूमेंट, तो you can correlate it with first point that वेरिएशन ऑफ रूट कैनाल एनाटमी। अभी वेरिएशन होगा कैनाल एनाटमी में, आप उसमें बीएमपी करोगे तो जो आपके फाइल है उसमें जो उसका टेंशन होगा वो क्रिएट होगा, जब टेंशन क्रिएट होगा तो फाइल जो है घिसेगा, उसको फ्लूइड्स घिसेंगे। एंड सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ओवर यूज और डैमेज और डल इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी यही है, जब आप फाइल यूज करोगे कोई ओवर यूज हो चुकी है तो भी उसके फ्लूइड घिस चुके हैं। तो बेसिक थिंग इज, जब भी केसेस करो एक बार उसकी फ्लूइड्स जरूर चेक कर लो, फ्लूइड्स कैसे हैं। एक बार आपने जब भी कोई नई के फाइल खोली, हमेशा फाइल खोल के जब यूज करो तो हमेशा उस फाइल के फ्लूइड्स देखा करो, हर बार देखा करो। इससे क्या होगा कि एक्चुअल में जब नए पैकेट में से फाइल निकलती है और आप उसे बार बार हर बार देखोगे 5-6 दिन के अंदर, तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाएगा कि भाई नॉर्मल कंडीशन में फ्लूइड्स ऐसे होते हैं। और फिर जब आप बाद में फाइल्स को यूज करते हो, और ऐसे केस में जब आप फाइल के फ्लूइड देखोगे तब नॉर्मल कंडीशन से हटके जब उसके घिसे हुए फ्लूइड्स आपको दिखेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि भाई फाइल गई, फेंक दो। आप ऐसे केस में अगर फाइल फेंक दोगे, आप एटलीस्ट इस टाइप के मिसहैप से बच जाओगे। तो पहला और दूसरा पॉइंट ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। थर्ड इज इनएडिक्वेट इरिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। इरिगेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वहां पर आपका टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा तो इंस्ट्रूमेंट बहुत जल्दी घिसेगा, बहुत जल्दी घिसेगा, फाइल ब्रेक होगा। ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर आप दोगे तो फाइल पे बहुत टेंशन पड़ेगा, टेंशन पड़ेगा, आपकी फाइल फ्रैक्चर होगी। और इनएडिक्वेट एसेस कैविटी प्रिपरेशन, अगर आपने एडिक्वेट इनएडिक्वेट एसेस कैविटी प्रिपेयर करी तो फिर आपकी फाइल पे फ्रैक्चर पड़े, आपकी फाइल फ्रैक्चर होगी। क्यों होगी? होगी तो प्रेशर पड़ेगा। तो फोर और फिफ्थ पॉइंट ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे हमेशा। प्रोग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, prognosis and management of separated instrument depend on level of instrumentation in the canal, that is coronal, middle, apical, one third, size of instrument, degree of infection beyond the level of separation. Treatment is wire loop technique, Mason gate, endo extractor, instrument removal system, bypass technique or surgical treatment. This is an image of instrument separation, ये भी मेरे से मोबाइल से खींचा गया है। डीएनए
You can see the preoperative radiograph after removal of instrument, and you can see the post-op image. Prognosis is when separation of large instrumentation occur in later stages of the patient, close to working length. Worse for teeth with undeprecated canal in which small instrument is separated or short of the apex in early preparation. Prevention is use of SS file instead of carbon steel files. You can bend the instrument. Use smaller number of instrument, only one. Never use instrument in the dry canals. Never force the instrument into the canal. Obturation related accidents, underfill or incomplete fill route treatment. Underfilling, that is more than 2 mm short of the underfilling or short of the radiography apex can occur because of the ledge formation, blockage, or incomplete obturation. Etiologies: inaccurate working length, ledge created during preparation, insufficient flaring, poorly adapted master cone, inadequate condensation pressure. As you can see here, कितनी बेहतरीन ऑब्जर्वेशन करी है माशाल्लाह. When I was in ग्वालियर, एक वाइक के पास एक पेशेंट गया, वाइक ने करी थी. हमेशा ऐसी ऑब्जर्वेशन से बचें. Prevention is obtaining straight line access to the canal orifice to apex, pre-curving the files before using in the curved canals. Use the files sequentially. Copious irrigation and encapsulation of the canal. Treatment is removal of underfilled GP, and retreatment is preferred in such type of cases. Removal can be accomplished by pulling the cones in reverse order of the placement. सबसे इजी तरीका है कैश पैक डालो और निकाल लो. जीपी रिमूवल वाला लिक्विड आता है, इसका 2 ड्रॉप डालो कैनल जीपी के ऊपर, एच फाइल इंसर्ट करो, 20-25 नंबर का, बहुत इजीली प्लग आउट हो जाता है. व्हाट आई प्रेफर एसएक्स हैंड पोटेपर. एसएक्स हैंड पोटेपर से बहुत इजीली प्लग आउट हो जाता है. थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली एच फाइल बोला गया है. Practically in my practice, when I do the retreatment, I prefer SX hand pro taper. If you are good at hand pro taper, if you are friendly with your using hand pro taper, you can use SX. Don't go for S1. Overfilling of root canal, बार obturation कर दिया तो खत्म. Overfilling of the canal is filling more than 2 mm on the root radiographical apex. Causes is inadequate determination of the working length, incompletely formed apex, inflammatory apical root resorption, or lack of proper taper in the prepared canal. Treatment is when sign and symptoms of endodontic fillet appear.
Apical surgery may be required to remove the metal from the apical tissue and place the root and filling material. Prevention is taper prevention with apical matrix should be usually prevent the overfilling. Largest file and master bone at the working line should have the positive stop. If overfilling is suspected, radiograph should be made before the SS gatta parcha and it is removed. Vertical root fracture. It can occur at any phase of the root canal treatment, during BMP or during obturation or during post-op treatment. It results from wedging forces within the canal. इसका सबसे कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या है? फेशियल लिंगुअल प्लेन पे दिखता है. Sudden crunching sound and accompanied by the pain. Fracture begins along with the canal wall and go outside the root surface. Prognosis is complete vertical fracture based upon unfavorable prognosis. Treatment is extraction in most cases. Root and dissection or hemisection can be done in multi-rooted. Prevention, appropriate canal preparation should be done. Use balanced pressure during obturation. Perforation होता है. इनिशियल डेज में बहुत लोगों से होता है ये, बाद में नहीं होता, पर हाँ ये में से भी बहुत होता है. तो perforation is the mechanical or pathological communication between the root canal system and the external surface is called perforation. According to GET, perforation can occur during SS cavity preparation. बहुत सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन यही वाला है. एसएस ओपनिंग करते हैं, परफोरेट कर देना. अब द पेरोडोंटल अटैचमेंट, leakage of saliva into the cavity or sodium hypochlorite in the mouth into the periodontal ligament and bleeding and during instrumentation procedure. It happens at three levels. Cervical canal perforation occur while locating the canal orifice and flaring the coronal third of the root. Mid-root perforation occur in curved canal when the ledge is formed during instrumentation alongside with certain curvature of the root canal. And apical root perforation occur when instrument goes into the periodic tissue. तो ये ए और सी जो है सबसे कॉमन टाइप की परफोरेशन है. आपकी ऐसे आपको इनिशियल डेज में आपकी एसएस कैविटी प्रिपरेशन आपको इतनी अच्छी नहीं आती करना. एसएस ओपनिंग करते में आप जो है परफोरेट कर दोगे. इनिशियल डेज में बहुत कॉमन है. वर्किंग लेंथ प्रॉपर लेनी नहीं आ रही, बीएमपी प्रॉपर करनी नहीं आ रही, एपेक्स परफोरेट कर दोगे. ये बहुत कॉमन है, होता ही है, सभी से होता है. तो कोई घबराने वाली बात नहीं, सब सही हो जाता है. Everything can be managed. You can see a perforation there. एपेक्स के बाहर जा रही है 15 नंबर की फाइल. इट वाज टेकन अंडर माइक्रोस्कोप. एक्सट्रैक्टेड सेंट्रल इंसाइजर है. टेकन बैक इन 2015. मेरा थीसिस का केस था, थीसिस का था तो मुझे उसमें चेक करना था वर्किंग लेंथ. उसमें मेरे को परफोरेट करके भी देखना था. मुझे ये भी करके देखना था कि कौन सी एपेक्स लोबेटरी वर्किंग लेंथ कैसी क्या होती है. तो अब जो भी मैंने यूज किए थे उसमें एक एपेक्स लोबेटर ने जो है पर वर्किंग लेंथ प्रॉपर बताई थी, पर जब मैंने टूथ चेक किया तो उसमें परफोरेशन थी. तो मैंने ऐसे ही फोटो ले लिया कि परफोरेशन में कैसा दिखता है. माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करना था, तो अभी आपके सामने है कि परफोरेशन में कैसा क्या दिखता है. Occurrence of perforation can be recognized by using paper point, sudden appearance of bleeding, or complaint of pain by patient when instrument touches the periodontal tissue. Treatment is the repair of perforation depend on the location and size of perforation.
Material can be used for perforation repair is MTA and biodentin. मैंने पहले भी बोला MTA आपको यूज करना नहीं आता है, आप फ्रेंडली नहीं हो, and if you are not friendly with the biodentin, you can use type 9 GIC2 for that. You can repair it with GIC2. And other procedural errors are aspiration or ingestion of instrument. It's very unfortunate if this type of mishap happen कि किसी कोई पेशेंट का आप आरसी कर रहे हो और वो आपकी फाइल जो है वो आपकी फाइल अपने गले के अंदर ले गए, फाइल गले के अंदर चले गए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है. हाउ टू ओवरकम दिस? जो हैंडल होता है फाइल का, हमेशा उसमें फ्लॉस लगा के रखें, फ्लॉसिंग करके रखें, जिससे ऐसे अगर वो कभी गिर जाता है कुछ होता है तो फिर आपका जो फ्लॉस है वो काफी लंबा है, आप उसको पकड़ के उसे बाहर खींच सको. Treatment is high volume suction tips and cotton pliers are useful when object is really swell in the throat. Once aspirated, immediately aspired and emergency medical attention should be done. Prevention is endodontic instrument can be tied up by floss to prevent the aspiration. Proper tooth isolation with rubber dam should be done. But we all know that we all say we have to do isolation with rubber dam, but rubber dam. But still, we all know that even today 60 more than 60% of people don't use rubber dam. So if you are not using rubber dam, then at least you have to tie your instrument with the floss. This happens when a patient ingests a file irrigation related accident caused by an irritant that has a potential. When the problem is excluded, like sodium hypochlorite, immediately inflammatory response followed by the tissue. Hydrogen peroxide can cause tissue emphysema. Diagnosis is pain and swelling and hemorrhages. Treatment is antibiotic and analgesic should be given. Intramuscular steroid should be given. Hospitalization should be done or surgical intervention should be done if there is advanced problem happen. Prevention is loose placement of irrigation needles, careful irrigation with light pressure, you place a rubber stop on irrigation needle shorter than working length to stay away from the apical foramen during irrigation. Up and down movement of needle during irrigation help the prevention and locking of needle inside the canal. Use of less concentrated irrigants or saline in teeth with open apices. Don't force your needle apically. Never force it. Solution should be delivered slowly without pressure, and needle should not be wasted into the canal. Prognosis is favorable if immediate treatment and proper management is done. So, in last, I have to say that endodontic accident can happen in day-to-day life. Proper precaution should be taken to avoid these accidents. Otherwise, it will affect the prognosis of the medical treatment. If accident occurs, it should be treated immediately. Thank you. Thank you, Dr. Amil, for a wonderful lecture. Thank you, Now sir. we are now we are open for questions. Yeah. If anyone have any doubt, any question, any queries, you may ask Dr. Amil.
Doc Sahab, can you please explain the irrigation procedure protocol, because that is one of the most overlooked thing, and it is very important as you have just told us. Ma'am, irrigation type protocol. Okay. Ma'am, if you are doing, you have to be very careful while doing the irrigation of sodium hypochlorite, because while doing the most of the accident occur while doing irrigation is of during irrigation of sodium hypochlorite. हेलो मैम, आवाज आ रही है? Yes, yes, हाँ आ जी, रहा है हाँ आवाज जी। आपका। तो मोस्ट कॉमन थिंग और मोस्ट कॉमन एक्सीडेंट हैपन while doing irrigation is doing the irrigation of sodium hypochlorite. If if you are doing the irrigation of sodium hypochlorite, always use the side vented needle, and always use the most ultra thin, ultra fine needle, 27 gauge needle, while doing the irrigation of sodium hypochlorite. And when you are doing the irrigation using sodium hypochlorite, keep one thing in mind: don't put pressure on your syringe because when you are doing irrigation with pressure, it can go apically and can cause any type of accident related to hypochlorite. So copious irrigation should be done, but slowly, slowly, and also while doing irrigation, हमेशा निडल को अप एंड डाउन मोशन चलाना है, स्लोली स्लोली। जैसे आप नीचे तक लेके गए, आपने इरिगेशन स्टार्ट किया विद लाइट प्रेशर, एंड देन आपको अपने निडल को ऊपर की तरफ लाना है, ऊपर लाना है, लाना है, लाना है, लाना है, लाना है। जैसे ही आपको लग रहा है कि ऊपर तक आ गया है, ओपनिंग तक आ गया है, ओरिफाइस तक आ गया है, पेशेंट से कहना है थूक लो। फिर आपको अपना निडल को फिर अंदर ले आना है, एपेक्स तक स्लोली प्रेस करना है, बिल्कुल स्लो प्रेशर के साथ ऊपर लाना है, लाना है, लाना है, लाना है, लाना है। जैसे ही आप 45 तक आ गए, तो इसकी वजह से जो भी आपका डेब्रिस होगा, नीचे से डेब्रिस वापस फ्लो होगा। वहीं अगर आपने नीचे ले आके प्रेशर के साथ आपने अगर कर दिया, तो हाइपोक्लोराइड हो चाहे सलाइन हो, वो बियॉन्ड भी जा सकता है, और हो सकता है आपका डेब्रिस लीन भी ना हो, और उसकी वजह से वहां पर आपका टिश्यू डेब्रिस एपेक्स पे जम भी जाए। सो दिस इज द प्रोटोकॉल फॉर इरिगेशन। Thank you so much. Thank you so much. मैम, मैंने बताया, आपको क्लियर समझ में आया मैम ये चीज? शुड आई रिपीट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब। 27 kg, yes? यस मैम, बेस्ट। Anyone else want to ask something from Dr. Amil? No, sir. It was a very good lecture, sir. Actually, Thank you, I'm Dr. traveling, Sharma. but I was trying to attend every uh, in the mid of your lecture and coming, going is all happening between me. थैंक यू डॉक्टर शुक्ला। ओके। Anyone else want to ask something? Okay, so we can close our session today. If you have any doubts, any queries, you can contact us and you can follow us at the Dental Creators on YouTube, Instagram, Facebook, and you can also follow our Medical Aura team at the Medical Aura on YouTube, Instagram, and as well as on Facebook. And you can also follow Dr. Amil Sharma for any queries on Facebook, Instagram. He is also available on LinkedIn also. Okay. Thank you, Dr. Amil, for so a wonderful lecture and थैंक enlightening us for from the mishaps, how we can overcome the mishaps in endodontics. We have learned very much basic things which we avoid during our practice. Okay. Thank you very much for giving, sir.
us such a precious time. Thank you. Thank you, sir.